Here we have a question from JEE Advanced 2024 paper 1 online. In this question, it's given that particle of mass m moving in a circular orbit under the influence of central force, that is Fr is equal to minus kr. और potential energy यहाँ पे दिया है kr square by 2, where k is equal to positive force constant, r is equal to radial distance from origin, and angular momentum is equal to L is equal to nh, where h is equal to h by 2 pi. V and E are speed and total energy. Find the correct expression. So इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम. एंड ये क्वेश्चन है यहाँ पे जे एडवांस 2024 का. सो सॉल्यूशन पहले हम करेंगे इसमें फ्री बॉडी डायग्राम, जहाँ पे यहाँ पे मास m आपको दिख सकता है और मास m यहाँ पे गिवन है कि फोर्स इज इक्वल टू माइनस के आर. सिंस यहाँ पे माइनस गिवन है, सो फोर्स का डायरेक्शन मैंने इस साइड मान लिया क्योंकि ये माइनस गिवन है. सो इसको हम बोल सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होता है. सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू के आर फोर्स गिवन था हमारे पास, और सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एम बी स्क्वायर बाई आर. सो फ्रॉम हेयर वी कैन राइट के आर को हमने इस साइड ले लिया. सो के आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर, एंड फ्रॉम हेयर वी कैन राइट वी इज इक्वल टू रूट के आर स्क्वायर बाई एम. सो रूट के बाई एम आर. सो इट बिकम्स आवर first equation, and again it's given that angular momentum is equal to L is equal to nh, while h is equal to h by 2 pi. so angular momentum का अगर हम equation लिखते हैं, so mvr अगर होता है कि angular momentum L is equal to mvr होता है यहाँ पे हमारे पास. so mvr is equal to nh by 2 pi, क्योंकि L equal to nh by 2 pi भी होता है. so यहाँ से हम लिख सकते हैं v is equal to nh by 2 pi mr. अब इन दोनों इक्वेशन को हमें कंबाइन करना होगा. इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके ये थर्ड इक्वेशन जो मिलेगा, ये मिलेगा हमें r इज इक्वल टू वी रूट एम बाई के, क्योंकि यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे ऑलरेडी गिवन था v इज इक्वल टू रूट के बाई एम आर, एंड यहाँ पे हमारे पास गिवन था एन एच बाई 2 पाई एम आर. सो इन दोनों को अगर हमने कंबाइन किया, सो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट r इज इक्वल टू v रूट एम बाई के. एंड यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे रूट के बाई एम आर यहाँ पे था, इसको हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई एम आर, और इन दोनों को अगर हम इक्वेट करते हैं, सो यहाँ पे आता है हमारे पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई एम रूट एम बाई के. या इसका मतलब एन एच बाई 2 पाई को हम एच ऐसे लिख सकते हैं. सो ये बिकम्स एन एच root 1 by mk. so option number A becomes our correct option. And again from equation 1 v is equal to root m by k. so from combining these two equation 2 and 3, you can see that v is equal to nh by 2 pi m, and r is given as v root m by k, so it becomes v root k by m. so from here v square becomes nh, because h by 2 pi is h and cross like this, root k by m cube, because root m was already here and it's m again, so it becomes m cube. so option number B also becomes our correct option here. And after this, from option number C, it asks about the L by mr squared, and we know that L is equal to angular momentum, that is mvr. so L by mr squared, that is v by r, we have multiplied r in the denominator in both sides, so it becomes root k by m, because v by r is k by m we have got from equation 1 already. so option number C here becomes the correct option. And after that, option number D, in option number D it's given that E is equal to k plus u. K is half mv square and u is given us in the question, that is kr square by 2. so from here we can do one thing, that we can see that from equation 1 mv square is equal to kr square. so half kr square plus half kr square equal to kr square equal to k, and value of r given is nh by r square is given as nh root 1 m by k, nh root 1 m by k, so it becomes nh root k by m. so option D is incorrect because it's given divided by 2 here, but here is no divided by 2, so option D becomes our incorrect option.